रिसेप्शन में 2-3 फोन मैंने देखे हैं। सबको बात कितना बार नाम को बोल के रखो साइलेंट पे रखो, जो टाइम मिलेगा तो चालू हो जाते हैं, है ना? वो नहीं आया अभी तक। क्या वो नहीं आएगा क्यों? एग्जाम चल रहा है। हाँ तो भी क्लास के बाद में काम करती है, एकदम रिलैक्स में है, तो कैसा एग्जाम वगैरह चालू हो गए। Wait second. So still time is there. मैम पर You need AC. चले जाएंगे। यस सिंबल से तो एटॉमिक मास चालू किया, सिंबल से हो गया था, हो गया था? सिंबल हो गया। Volume 2 लेके आई हूँ। वॉल्यूम 1 नहीं है ना? वॉल्यूम 1 2 वॉल्यूम 1 है। आगे पीछे Volume 2 है। I think this symbols you have completed. Yeah. ये वाला। मैंने अपनी केमिस्ट्री नोटबुक पर किया मैं किया? बायो से नोटबुक किया मैं को लगा What is happening? अच्छा चलो, ये ऐसे सब स्कैटर क्यों हो गए? तो इधर एक वहाँ पे चली गई, सब ठीक है, झगड़ा नहीं करना। अच्छा, चलो बस थोड़ा सा चेंज जरूरी थे और ज्यादा नहीं। Okay, now this symbol part we have started with an atom. What is an atom? So in short, tell me what is an atom in that smallest building block of matter. वो वाले era with respect to that era, atom is the smallest or the building block of the matter. Then we have completed this symbol of those era. Okay, so only the circle is very important in all symbols. You will find circle is there. Okay, बड़ा वाला circle and in dot with some small changes. ज़्यादा changes नहीं है, but with few changes you can identify atom symbols of different atoms. मैम हमें सारा मैनुअली का करना है क्या? क्या करने बस हमें मैम ने बोला कि 20 का करना है, ये चैप्टर में नहीं बोला है कुछ। क्या 20 का symbols करने के ना, तो ये मैंने आपको बताया ना, this symbols were used in ancient days. We are not using these symbols now. You have to learn all these symbols. 1 to 20. Even if you go with that valency वाला table ना, 20 elements का symbols है. With atomic number you will learn symbols also. उसमें 20 बोलना है ना, randomly 20 और 1 to 20. हाँ, तो better you learn that table ना, वो easy हो जाएगा. और मैं आपको एक अच्छा idea बताऊं, that 20 element. चलिए show me that. सीधा बैठो. Where is your notebook? Notebook से next notebook ले लो. Notebook and come back to your this. Numbers I will take it. वैसे तो मैं dictate करती हूँ. ये आपने क्यों अपना स्पेस चेंज किया? कंपार्टमेंट को कॉर्नर में चली गई, वहाँ पे सब लोग हड्डी लग रही है, इसीलिए बंद करना है. हाँ, वो 1 to 20 elements ना, they are in the order of increasing atomic number. So if it is not possible to by hand directly, तो simply नहीं होता, चार्ट बनाओ उसका. और फिर भी आप लोगों से नहीं होता ना, तो बहुत सारे ट्रिक्स हैं उनको लर्न करने के लिए. आपको तो just you know ना, you are aware that 20 elements are there in the increasing order. अब वो सीक्वेंस क्या है उसके लिए आपको YouTube पे मिल जाएगा कुछ ट्रिक्स, इजी ट्रिक टू रिमेंबर. Only 1 to 20 सिंबल वगैरह आप लोग करो तो उसका टेंशन नहीं है. तो दिस सिंबल्स they are Asian symbols which we are not using. I don't think teacher will ask question based on this part. Let us see then the next part. I think this also नहीं होगा लास्ट टाइम इसके ऊपर पॉसिबिलिटी कुछ भी है. तुम्हारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं मुझे नहीं पता, तो नॉर्मल भी ऐसे दे सकते हैं आपको. आइडेंटिफाई द एलिमेंट, राइट द सिंबल, एशियन सिंबल, कुछ भी कर सकते हैं. अभी टीचर सामने से बोल रहे हैं एशियन सिंबल और कौन से सिंबल्स होते हैं? अभी मॉडर्न डे वाले सिंबल जो हम लोग आईपीएससी कर रहे हैं वो सारे आईयूपीएससी वाले सिंबल्स हैं.
टीचर तो क्लियर कर दिया ना कि शी इज नॉट गोइंग टू आस्क दिस वन। ने चैप्टर कुछ नहीं बोला, मैम ने बोला अरे ये सिमिलर 20 लर्न। तो इसका मतलब ये है ये नहीं पूछेंगे, वो यही पूछेंगे 20 लर्न करने बोले तो 20 में से ही पूछेंगे। आपको तो 30 लर्न कर दो बट शी विल आस्क फ्रॉम 20 ओनली। ओके, उसके बाद आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट आल्सो फ्रॉम ओरिजिन। एटॉमिक मास से चालू यहाँ से ये सब कंप्लीट हो गया। श्योर आईयूपीएससी व्हाट इज फुल फॉर्म? इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ प्योर एंड अप्लाइड प्योर केमिस्ट्री। एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वो नाम देते हैं मैम, कई जगह के नाम से, कभी कलर्स से। हाँ वो पहले जगह के नाम से, कलर के नाम से। Then they found it is very difficult to identify from origin, from color. Then stories ये सब एक ही बार में नहीं होगा। जैसे हमने एटॉमिक मॉडल किए डिफरेंट सारे एक ही बार आ गए, सारे एक ही बार आ गए नहीं ना। पहले वाले में ड्रैगन था, then second one, then next one. So in that format only IUPAC nomenclature it is not done in one day with many steps. पहले origin, color, source जो भी कुछ है उसके बाद में finally they reach to this conclusion that they have to start with IUPAC nomenclature which is international union. Union means it is not single person, बराबर है, बहुत सारे साथ में रहेंगे। they will finally name the compound according to the rules। और rules क्या है आपको तो अभी 9th में थोड़े से रूल्स है, 10th में आपको पूरे आईयूपीएससी के रूल्स लर्न करने हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अब तो सिर्फ ऐसे ओनली सिंबल रिप्रेजेंटेशन। Afterwards in class 10 you have to learn alkane, alkene, alkyne, along with that some part from aromatic compound। आगे देखते हैं। Now the next part it is a atomic mass। अभी till now whichever thing we have completed, tell me whether you have came across the word atomic number। नहीं in under this topic। वो स्ट्रक्चर वाले टॉपिक की मैं बात नहीं कर रही। अंडर दिस टॉपिक सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। वी आर स्टडीइंग ओनली अंडर द कांसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। ओके, अब मैं आपको वो वाले जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना उसमें लेके जाती हूँ। नाउ इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम वी हैव लर्न atomic mass and atomic number। These two things we have completed, right? And we have given one representation। एक जनरल रिप्रेजेंटेशन दिया था कि दिस इज अ एलिमेंट। फॉर एग्जांपल दिस इज एनी एलिमेंट वेयर यू कैन रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। डू यू रिमेंबर दैट रिप्रेजेंटेशन? एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था, ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है इसका। In general we can represent like this। based on that representation you have solved few example। एटॉमिक नंबर आपने फाइंड आउट किया था, मास नंबर किया था। देखो आपकी नोटबुक में मिल जाएगा आपको रिप्रेजेंटेशन। फाइंड आउट क्विकली। है वही बुक है ना आपका? दूसरा है हाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखा ऊपर है, देखो एकदम टॉप में दिखा, एकदम टॉप में रिप्रेजेंटेशन दिया आपने। ए Z X दिखाई दिया। ओके, you all have done that। those who are present on that day ना you all have done। वो देखो राइट साइड में मिला। अच्छा वो हाँ मिला। आप अभी सुनो मैम बोले ना पायलट। so that representation is X A Z। आप लोगों के बुक में है। now what is X here? Any you can take any element। A is what? mass number, atomic mass number, and Z is atomic number। so A it is atomic mass number and Z is atomic number। now according to this thing how we can define atomic number and mass number? definition में बोल दो in short or whatever you remember regarding atomic number or mass number। Atomic number is equal to number of electrons, right? And atomic and mass number is proton plus neutron. Proton plus neutron। it is sum of proton and neutron। And that is also equal to proton। that is equal to number of proton। okay, मैंने ये सिंबल के साथ में दे दिया। now see atomic mass number it is a sum of proton and neutron। according to structure of atom it is sum of proton and neutron,
राइट ना, यही हमारा अभी का कंसेप्ट है, बट हम लोग 500 BC में इसे थोड़ा सा उसको पॉलिश करके फिर पीछे जाते हैं. And Z is what? It is an atomic number. Every time bit for different element we used to write in this way. 12, C, 6, where 6 is an atomic number, 12 is a mass number. And Z is what? It is a number of electron which is equal to number of proton. Now all this definition, example, it is possible now due to the progress of science and technology. अब पीछे आ जाओ where they were not aware or they were not considering this particular concept. They were only focused on this particular thing. तो अगर ऐसी वाली कंडीशन है when they are not considering atomic number, they were only focusing mass number. So do you think it was easy in that time to define this thing? Easy था उनके लिए, उनको पता भी रहेगा. समझ में आया आपके बात? ये दिस ऑल थिंग वी आर डिफाइनिंग नाउ. ज्यादा से ज्यादा कितनी 500 BC बोला है टॉपिक की स्टार्टिंग में. 500 BC इज सच अ लॉन्ग टाइम, बहुत पुराना है. जब उनको ये वाला नंबर Z वाला कंसेप्ट they were not at all using. They have used the concept of only atomic mass number. Okay, and that too atomic mass number तो भी हमको यहाँ पे पता चलता है कि atomic mass number is the sum of proton and neutron. तो डायरेक्टली उनको मास कैसे मिलेगा? एटॉमिक मास नंबर मिलेगा कैसे? तो आप पीछे जाओ, एकदम उस टाइप के हिसाब से सोचो. कोई ऐसा कोई कुछ रहेगा क्या गैजेट जिससे एटॉमिक मास नंबर, जब हम ऐसे बोल रहे थे तब इतना प्रोग्रेस नहीं था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. इवन फॉर नेमिंग द कंपाउंड दे टुक सपोर्ट ऑफ ओरिजिन एंड कलर. बराबर है ना? तो उस समय में एटॉमिक नंबर मास नंबर फाइंड आउट करना इतना इजी रहेगा? आपको क्या, आपका पॉइंट पता रहेगा इतना इजी? ये चलो ये पर्टिकुलर ये मीथेन है, इसका मीथेन का ये एटम है, कार्बन का एटम है, इसका मास नंबर ऐसा है. पॉसिबल रहेगा? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है इससे? तो कुछ अलग लगता है? Sameness. Okay, Tanish, what about you? Same मतलब same in the sense it was easy or difficult? Difficult. All are bit difficult, correct? And the answer is difficult only. So that time they were not accurately calculating the atomic mass number. Instead of that, they were using the concept of gram. देखो जरा, हम लोग मास नंबर पढ़ रहे हैं. मास नंबर में वी आर नॉट यूजिंग यूनिट एज ग्राम. व्हिच यूनिट वी आर यूजिंग? यू नो यूनिट फॉर एटॉमिक नंबर, मास नंबर नहीं पता? यूनिट इज एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू IUPAC यूनिट इज U, दैट इज यूनिफिल. इसके कुछ समय, कुछ टाइम पहले यूनिट यूज वाज AMU, एटॉमिक मास. है ना वो? I think it is unified. देखो जरा चेक करो. Correct. NIFIELD. 41 from bottom it is third line. यहाँ पे देखो. अच्छा. यूनिट आएगा. कुछ नहीं चाहिए उसको, है उसके पास सब कुछ घर में है. यहाँ तो at present according to IUPAC system this U can be used. इसके before IUPAC AMU was used, atomic mass unit, and even today we are at some places AMU is used. But वहाँ पे instead of using these two unit they were using unit gram. ग्राम वाला यूनिट यूज करते थे. अभी ग्राम वाले यूनिट से कैसे करेंगे? किलो के ऊपर काउंट करेंगे? क्वेश्चन है ना ये भी. किलो के ऊपर काउंट करेंगे? नहीं, किलो तो बड़ा हो जाएगा. यूनिट स्मॉलेस्ट मतलब ग्राम से हो जाएगा. So in our book again one reaction is given. If we are during that time they carried out preparation of carbon monoxide and said here 4 grams of carbon combined with 3 grams of oxygen to form carbon monoxide. अभी इसमें
इसके अंदर का ड्रॉबैक क्या है मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये पर्टिकुलर जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन दे टुक सपोर्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स व्हिच यू हैव ऑलरेडी डन। द फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज अ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ओके, व्हाट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन? What is law of definite proportion? We have done two statement, na? The elements are always present in different proportion levels. Different proportion? In a chemical substance. Different proportion? Definite. अच्छा, definite proportion. Whichever you take the example, it may be either तुम लोगों का है ना कुछ तो I don't know, something is going on. Whether you have planned to go out somewhere? नहीं ना? तो you all are here ना with me? Sure? हाँ, ऐसे मुझे ऐसा क्लास हमेशा के जैसे नहीं लग रहा है, पता नहीं, I don't understand what is happening, but something is wrong going here. See, carbon monoxide, two statements are supporting. First one, it is a law of definite proportion. Now, according to definite proportion, you take any compound from any source. Whatever is a proportion of carbon, oxygen, carbon monoxide के example में, it will be fixed. Okay, either you take from the natural source or you take from the man-made source. So यहाँ पे one carbon, one hydrogen, this proportion will remain the same. And the first law or the first statement, it was law of conservation of energy. Conservation of mass. According to that law, if you take, for example, 5 grams of reactor, on product side, you will get 5 grams of product. ये दो लॉ को सपोर्ट करके उन्होंने ये पर्टिकुलर एग्जांपल दिया था that 4 grams of carbon combined with 3 grams of oxygen to form carbon monoxide. But do you find anything is missing in this thing, or you are comfortable with this equation? देखो कुछ मिसिंग है क्या इसके अंदर as per our law of conservation of mass? मैम C6 होना चाहिए। नहीं, एटॉमिक मास मतलब क्या बोलना है उसको, एटॉमिक नंबर और मास जो हमारा एट प्रेजेंट है ना, उसको नहीं कंसीडर किया है उन्होंने, ग्राम में कंसीडर, 5 किलो, 2 किलो, 1 ग्राम, 2 ग्राम, ग्राम में कंसीडर किया, एटॉमिक यूनिट में कंसीडर नहीं किया। डिफरेंस समझ रहे हो आप? हाँ, 6 किलोग्राम, 6 ग्राम। फॉर एग्जाम्पल, अब इनको एग्जाम्पल कैसे दूं मैं, सब्जी बनानी है, अब फॉर एग्जाम्पल हमको खाना ऑर्डर करना है, तो खाना ऑर्डर करने के लिए फॉर एग्जाम्पल वी आर सेइंग 5 kg वेज पुलाव, ओके, 5 kg वेज पुलाव, तो जो कुक है he will what he will do, he will arrange the things properly in order to have the weight of 5 kg or approximately 5 kg, बराबर है? इससे ज्यादा तो नहीं देगा ना अपने को, कम एक हाथ भर देगा पर ज्यादा नहीं देगा। This is a fact. This is fact. They सकते हैं but not always. They are smart enough. समझा मेरा बात? कंजर्वेशन में हमने क्या पढ़ा था? One proportion was 2:60. बिरयानी पुलाव का। Okay. कंजर्वेशन में क्या पढ़ा था हमने? मास या नाइट्रेट It is indivisible or नहीं, मास इसे इनविजिबल इंडिविजिबल मत करो। हाँ, यहाँ पे हम खाना बना रहे, पुलाव बना रहे 5 किलो का, और तुम इनविजिबल बोल रहे हैं, पुलाव also इनविजिबल, हाउ इज इट पॉसिबल? इनविजिबल भी नहीं चाहिए हमको। देखो फिर से मैं आपको पीछे लेके जाती हूँ, एटॉमिक मास यूनिट एंड यूनिट फील्ड, दिस ऑल यूनिट्स आर मॉडर्न डे यूनिट्स। उस समय इतना टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस नहीं था कि वो ये सब यूनिट के थ्रू कर सकते, तो उन्होंने ऐसे रफ एस्टिमेशन के भाई 1 kg में बड़ा यूनिट बोल रही हूँ आपको, 1 gram of this gas, 1 gram of this gas, it will combine to form this particular gas in grams. 1000 gram makes
1 kg समझ में आया कि अभी भी नहीं समझा? ये पहले वाला भी थोड़ा हजम कर लो तुम लोग। हाँ, पहले ये वाले यूनिट थे हमारे एएमयू एंड यूनिट था क्या? नहीं, क्योंकि इतना प्रोग्रेस था ही नहीं, तो कौन सा यूनिट यूज कर रहे थे वो लोग? Which unit they were using? ग्राफ। इसलिए तो बोले ना क्लास नहीं है यहाँ पे। ग्राम वाला यूनिट। सो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राम यूनिट, अभी भी तो हम लोग बोलते हैं ना 1 kg sugar, we are saying ना for solid compound we are saying 1 kg sugar, 1 kg potato, 1 kg onion. If it is liquid we are saying 1 liter, 2 liter, 1.5 liter, बराबर है ना? तो वो वाला concept use करके 4 gram of carbon with 3 gram of oxygen they combine to form carbon monoxide. Now, as per if I am saying that two laws are supporting, first law is of mass and second law is of definite proportion. Then, according to this true statement, whether this given data it is correct or something is missing, दोनों लॉ अप्लाई करो और देखो मैंने जो लिखा है वो सब लिखा है या कुछ इसमें मिसिंग भी है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, according to law of conservation 4 plus 3 it should be equal to 7, बराबर है? 7 again on decomposition it will form 4 plus 3, बराबर है? It is given here mass of carbon monoxide is given here, it is not given in our books. Check करो, you also check it, see यहाँ पर बेटा 4 ग्राम मैंने बोला, 3 ग्राम बोला, ओके? I said carbon monoxide is formed, but if we are saying that two statements are supporting this particular thing, then here it should be 7 gram. It is mentioned there. How much gram is formed? Instead of that, again ratio is given. Check करो. 4/3 ratio is given. And do you think that ratio value, if you calculate, it will match this particular thing? कितना है रेशियो? 4/3 4/3 को करो, डिवाइड करो, आंसर देखो कितना अच्छा। Some we are saying ना whether you will get that value, मिलेगा आंसर से मिलेगा, डिविजन से नहीं मिलेगा। उसने क्या दिया है? सम से मिलेगा, डिवीजन से नहीं मिलेगा, लेकिन उसने फ्रैक्शन दिया है, राइट ना? 4/3 it is fractional, so whether you will get answer 7 here? No. समझ में आया? मुझे क्या बताया, आपके समझ में आया? First thing, okay, first thing it is about gram, because that time this particular units were not discovered, I will say not discovered, so they were going with the gram. ओके, विद ग्राम। इतना क्लियर है? पक्का? श्योर? उन्होंने क्या बोला है? विद ग्राम दे आर गोइंग, बट अगेन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द mass, atomic mass, which as present it is sum of proton and neutron, which cannot be measured with the 2-pen balance or digital balance. Can be measured? Can we find out? मैं कोई भी एटम का मॉलिक्यूल रख दूं कहीं पे और मैं फाइंड आउट करना चाहूँ, आई वांट टू कैलकुलेट द एटॉमिक मास, इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है? मैं कोई भी मॉलिक्यूल रख दूं, हाँ, और उसका मैं अगर मास निकालूं, एटॉमिक मास, तो कैन आई फाइंड आउट? मैं थोड़ा बैठती हूँ, 2 मिनट बैठती हूँ। हाँ, कौन सा पार्ट नहीं समझे? ये पूरा पार्ट नहीं समझे। कहाँ से नहीं समझे? यहाँ पे बताओ कहाँ से नहीं समझे? That AXZ is clear to you? This AXZ, whether it was used in the ancient time, in that we see, क्यों नहीं यूज करते रहेंगे? डिस्कवर नहीं हुआ था, तो ये तुम्हारा आंसर पक्का है? हाँ, दिया इन बिटवीन, अगर कुछ मिस हो जाएगा तो बता देना, ये सब डिस्कवर नहीं हुआ था। ओके, तो उन्होंने बेटर ऑप्शन क्या लिया? यहाँ तक आ गया बेटर ऑप्शन।
अब वो जब ग्राम वाला ऑप्शन ले रहे हैं तो in that they are saying that two statements are there है ना, they are supporting this particular thing ग्राम वाला unit. Okay, so for time being we will also assume it is supporting. Okay, अभी हमने मास वाले स्टेटमेंट में क्या देखा है, मास इज कांस्टेंट एट बोथ द साइड, यही देखा है ना, मास इज कांस्टेंट एट बोथ द साइड, एटॉमिक मास का किया है ना हमने वाटर फॉर्मेशन, उसको निकालेंगे तो भी सेम रहेगा, उसको जोड़ देंगे 1 plus 1 is 2. Okay, नहीं 1 plus 1 2 plus 1 is 3. Proportion is 2 and 1. बराबर है, पहले 2 है फिर बाद में 1 है. Answer is 3. But when I am dividing it, again I am getting 2 plus 1. पहले 2 और फिर बाद में 1. मतलब कुछ लॉस हो गया. मैंने 2:1 लिया था and again I am getting 2:1 after dividing 3. क्या डिवाइड 3 को डिवाइड कर दिया. हाँ, ये ऐसा क्यों होता है? You all are growing, you are fresh minded, but वो जो AI, BI, CI जो अपने लाइफ में आ गया है ना, बहुत आतंक मचा के रखते हैं. वो हमको लॉजिकल थिंकिंग करने ही नहीं देता. Whatever thinking want ना, we immediately go for searching. Whatever we don't want, we immediately delete it. So the logical thinking part is completely gone. चपाती बनाते हो ना घर पे, मम्मी आप ही बनाते हैं. चपाती को अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 4 इक्वल क्वार्टर आ जाए. ओके, अभी चपाती का ड्रॉबैक ये है कि वी कैन नॉट जॉइन इट अगेन. अगर वो फिर से जॉइन होता, फॉर एग्जांपल इफ इट इज गेटिंग जॉइन अटैच्ड अगेन, तो पूरा एक चपाती ही मिलता था ना, बराबर है ना, कि कुछ टूट के फूट के कहीं पे जाता था, पर चपाती का गांठला फिर से जॉइन नहीं है. समझे? क्ले वाला मटेरियल रहता है, बच्चे खेलते कलरफुल क्ले से, पता है ना आप लोगों को, बहुत कुछ बनता है क्ले से. और क्ले को वो जो पेंटिंग वगैरह करते हैं उनको तो पता है, ड्राई करते हैं, बहुत कुछ उससे होता है, क्ले आर्ट करते हैं. तो अगर वेट क्ले है आपका, आप जॉइन कर रहे हो, उससे कुछ बनाया, शेप बनाया, if it is wet you can again separate it and make one ball again of same mass. कुछ लॉस नहीं होने वाला ना. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज सेइंग द सेम थिंग. जितना रिएक्टर लगा है उतने ही मास के इतना आपको प्रोडक्ट मिलेगा. लेकिन उसी प्रोडक्ट को इफ यू डिवाइड इट, इफ यू डिकम्पोज इट, यू विल गेट योर ओरिजिनल रिएक्टर विद द सेम मास. चपाती वाला एग्जांपल. But time being, assume that it will get joined together. After cutting, आफ्टर ब्रेकिंग, जो भी टीयरिंग, जो भी कुछ करना है, 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, चारों ने 4 ले लिया. बट इफ यू वांट टू मिक्स इट अगेन, इट विल बी कंप्लीट सर्कल. और कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है, कौन से भी सोर्स से आप ले लो, वेदर इट इज मैन मेड और नेचुरल, प्रोपोर्शन विल बी द सेम. ये दो वाले प्रिंसिपल उन्होंने कंसीडर करके ये एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. Okay, now as per our law of mass, 4 plus 3, it should be 9 here. 7. Oh, sorry. It should be 7 here. Okay, 7 on further division, it will give 4 and 3 as per our law. Second law, definite proportion. Either you take man-made source or the natural source, you will have the same number of atoms in same proportion only. Okay, now where our question arises, if we are getting, if these two laws are supporting, it should be 7 here, but uska mass nahi, gram nahi diya hai 7, instead of that it is given 4/3. और अब डिवाइड करोगे, it will get 1 point I think 3 something, 1.33.
ये वाला आपको वैल्यू मिलेगा. सो वेदर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज सेटिस्फाइड हियर. हो गया सेटिस्फाइड? नो. हुआ है? पक्का ना? देखो अगर यहाँ पे 7 आता था तो हम बोलते थे ना इसको डिकम्पोज करके अगेन 4 and 3, but it is not happening. Instead of that it is given 4 by 3 grams of again 4 by 3 grams. 4 by 3 grams is correspond to 1.33 grams of carbon monoxide is formed by combination of carbon, 4 gram of carbon and 3 gram of oxygen. So can we use this unit further? Yes. अच्छा, अगर ऐसा होता तो अभी वही यूनिट कर देते ग्राम. फिर सब बैठते थे ऐसा वो लेके 2 पेन बैलेंस, चलो 4 ग्राम कार्बन दो 5 ग्राम ऑक्सीजन दो, ऐसे करते थे ना. और मास कहाँ बैलेंस हो रहा है? हो रहा है क्या मास बैलेंस? दिस इज अ ड्रॉ. अभी समझा? चपाती के एग्जांपल से समझा, प्लेट के एग्जांपल से समझा, क्या समझा बताओ थोड़ा सा ही बताओ. नाम मतलब जैसे कि 4 + 3 7 होना चाहिए, तो यहाँ पे 7 आया तो हम 7 को भी डिवाइड करेंगे तो भी हमें 4 + 3 ऐड तो होगा. वो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया. हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो कैन बी क्रिएटेड और नॉट हाँ. तो वो सेम टोटल अमाउंट ऑफ मास इन द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट. कांस्टेंट है ना, इसका मतलब क्या? इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर रहे हैं, वी आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग. जो है उसको ही कंबाइन कर रहे हैं, जो है उसको ही कंबाइन कर रहे हैं. 7 आ रहा है, 7 को डिवाइड करें तो 4 and 3 आ रहा है. इसमें ऐसा तो नहीं है ना, दिस इज नॉट हैपनिंग. इंस्टेड ऑफ 7 यू आर गेटिंग 9 हियर, इंस्टेड ऑफ 7 यू आर गेटिंग 14 हियर. ऐसा तो नहीं होने वाला ना, ये नहीं होने वाला. Instead of 7 you will get either value 7 or approximately equal to 7. कुछ हम नया और कुछ डाले, ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड के प्लेस में you are getting CO2 तो मास इंक्रीज हो जाएगा. ऐसे कुछ है, with this proportion you will get only this count. ये हमने ऑक्सीजन कहीं से जनरेट करके कुछ नहीं लेकर आ गए. ओके. दूसरा वाला डेफिनेट वाला है जिसमें क्या बता रहा है, कोई भी सोर्स से ले लो. चलो अभी इसके ऊपर ज्यादा दिमाग नहीं खत्म करते. ग्राम वाला यूनिट था which is not used. The reason is that here we are, एक रीजन तो है the value is not given, it is in fraction which is coming out 1.33. and second thing, this value it is for oxygen. उन्होंने जो कैलकुलेशन किया था अकॉर्डिंग टू दैट दिस वैल्यू इज फॉर ऑक्सीजन एंड फॉर कार्बन इट इज 1. अभी जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है. हाँ तुमको तनिष बेटा, they are having all the recordings. Your parents can come and check with the recordings. Now this is a fractional value, but here we have the whole number value. Now you tell me whether it is easy to go with the whole number value or with the fraction value. Whole number value. So again this is a second drawback. एक तो यहाँ पे दिया नहीं है डायरेक्ट आंसर इन ग्राम्स, जो दिया है दैट वैल्यू इट इज कमिंग इन डेसिमल पॉइंट एंड कैलकुलेशन में डेसिमल पॉइंट इट इज नॉट यूजिंग. हाँ तो ये वाला यूनिट को भी कैंसिल करके, ये पर्टिकुलर दिस ग्राम वाला को कैंसिल करके, देन दे अगेन वर्क with the oxygen. See from where they are starting. They have started with gram unit and then gram unit के ये सारे drawbacks थे, then they jumped on oxygen. Now why they took oxygen? Reason पूछना है यहाँ पे. Oxygen क्यों? Because oxygen it is a reactive. It reacts with most of the other atoms. And you might be knowing when oxygen is reacting with metal, what is the product? Metal with oxygen. If any metal बोलने से अच्छा मैं आपको बोलती हूँ when iron is kept open, what happens? Rusting होता है. बराबर कैसे बोला फटाफट? Rusting होता है. गोल्ड का rusting होता है? नहीं होता. There is any change in silver? Black हो जाता है. तनिष्क को पता है. Slightly एक layer form हो जाता है. Slight change हो जाता है. But for gold and platinum there is no change. They are not reactive towards oxygen. इतना याद रखो तुम लोग. तो उन्होंने क्या किया? Instead of considering the decimal point, then they jumped over oxygen with the reason that oxygen is more reactive. अभी हमको पता है कि गोल्ड के साथ नहीं रिएक्ट होता है, प्लैटिनम के साथ में नहीं रिएक्ट होता है. So again
Again, can they go with that particular oxygen atom weight? कर सकते हैं. जो भी कुछ ऑक्सीजन एटम का जो मास रहेगा 1/16 ऑफ ऑक्सीजन एटम, कैन दे गो विद दैट पर्टिकुलर थिंग्स? आगे और कर सकते हैं. देखो ये है ना, एक्चुअली क्या हो गया, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पहले ही लिया है, जहाँ पे आपने बहुत सारे कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ लिए, लर्न किए, समझ लिए, थोड़ा ऐसा घर बना के रखा है. और मैं आपको 500 बीसी में लेके जाके आपको उल्टे क्वेश्चन पूछूंगी, ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हैं. तो याद रखना, ऐसे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग एटॉमिक मास यूनिट, वी आर यूजिंग यू, वी आर डिफाइनिंग मास नंबर, एटॉमिक नंबर अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट. तो उनके जो फेलियर्स है वो ही हम सिर्फ देख रहे हैं, उसके अलावा हमको ज्यादा नहीं कर रहे. उन्होंने जो थ्योरी बनाई थी उसके ड्रॉबैक्स क्या है, हम सिर्फ वही चेक कर रहे हैं कि ये ड्रॉबैक्स है, इससे फाइनली स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिस थिंग वाज इन्वेंटेड. समझ में आया? तो ये जो पुराना वाला है, मुझे नहीं लगता कि आपके टीचर्स भी इतना ज्यादा स्कूल में क्वेश्चन करेंगे उसमें. खाली समझो वो चीज को, सो दैट यू कैन रिमेम्बर. कुछ लिखने नहीं है आपको, कुछ तो लिख के तो आएंगे. नहीं ऐसा होने वाला तो नहीं. फिर ऑन द सेफर साइड क्या करना है, आगे बढ़ना है कि थोड़ा सा लिखना है? आगे बढ़ना है. अच्छा आगे बढ़ना है. This part is digested. You tell me, let me know this part is digested, then only I will go ahead. Otherwise, in short, I will give you in writing. क्या करना है? 1.75 हो गया है यार, वो पूरा टोटल नहीं आया. क्या क्या 1.7? मैम सर 100% से 75% समझ में आया. सब तो बचा हुआ 25 ही है. सिर्फ 25 ही है ना. मैम फिर देखो. हाँ ना, थोड़ा जहाँ पे नहीं समझ में आएगा वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं. क्यों मालूम है, तुम लोग ऐसे खाली सुनते रहोगे ना तो तुमको याद नहीं रहने वाला, और किसी को अगर डाउट रहेगा तो समझ में भी नहीं आएगा. बाहर से पानी भी क्या सकता हूँ. बाबा इतनी ठंड लग रही, मैं तो बोलते ऐसे ही बंद कर दिया. वो खाने के लिए बट टॉप कोई किया वो वाटर बॉटल इज नॉट अलाउड इन अलाउड. हम जो लेना है इसके पहले वाले पीरियड में पानी पीने गया था तनिष. हाँ हाँ. ओके राइट डाउन. Atomic mass तो ना बाहर मत. पर वो उसका ध्यान आज अंदर भी नहीं है. हाँ, और वो पूरी क्लास डिस्टर्ब कर रहा है आज. लेकिन बाहर आता है पानी पीने. उसको कल बोल दे. From tomorrow you carry your own water bottle. Huh? Write down. Dalton atomic theory. Dalton atomic theory proposed the atomic mass. Underline करो. हाँ, propose the atomic mass. It was about makeup completely. I don't think that we have it done. हम डांडे तो ऑप्शन ही हमने. नहीं मैम यहाँ पे लिखा है, वो मैम ने वो लिखा है. तो क्या है? This is different from my dear. This is atomic model, Dalton atomic model. But again, this model it is based on atomic mass. मैं बोल रही हूँ ना, आज तो सही नहीं है यहाँ पे. मैम बस वो एक बोल रही थी कि डाटा आपने बोला नहीं इसलिए. Dalton, according to him, each full stop. This is next sentence. According to him, each element has
Now this is based on the atomic mass. So each element will have characteristic atomic mass. Underline करो हाँ इसको, characteristic atomic mass. So if you are going with oxygen, it will have fixed atomic mass. If you are going with oxygen, it will have fixed atomic mass. Okay, and mass of carbon and oxygen, it will be same or different. Girls, mass of carbon and oxygen, it will be same or different? Different. बराबर है? यहाँ तक समझ में आया? हाँ, जहाँ पे नहीं समझ रहा प्लीज लेट मी नो. हाँ, underline that characteristic atomic mass. Then underline it. हो गया. उसके बाद में लिखना the theory could explain the law of constant proportions. बराबर है? हाँ, constant proportion में you know ना what is there in constant proportion? What is there in constant proportion? Definite proportion, fixed proportion, एक ही चीज है ना. हाँ, ये सब टेक्स्ट ये बॉडी में लिखा हुआ है ना जो आप बोल रहे हैं, तो मैं इसमें मार्क कर दूं तो चलेगा? मार्क्स में मत करो, तुम लिखो let it go from your hands at least once. हाँ, बोलो क्या है? What is there in fixed proportion, definite proportion, constant proportion? जो सेंटेंस कंप्लीट करके मुझे बता दो. हाँ, I am waiting for your answers. Two statements we have done. Remember, two statements are there in this topic. Mass wala and proportion wala. Okay, mass wala you can give example of that chapati, and for proportion water from any source. It will have the same chemical composition. Right now, same number of atom in same proportion. याद आया? कौन सा वाला किसके लिए लिखना है? तुम्हारी मर्जी. और सिट्रिक ऑक्साइड भी है. फर्स्ट वाला बोला चपाती वाला. हाँ, तो चपाती का एग्जांपल देखते मत आना, मैं तुमको अंडरस्टैंड करने के लिए चपाती का एग्जांपल देती है. Only for understanding, but for water you can give that example. Definite वाले के लिए you can give example of water. Understood ना? नहीं, ऐसे भी बच्चे होते हैं. हाँ, ऐसे कुछ क्लास में एग्जांपल लेते हैं तो वो लिख देते हैं. चपाती वाला it is only for understanding. चलो, then next one. Since determining the masses of individual atom was इसके आगे क्या रहेगा? It was easy, not possible. not possible, or it was difficult. हाँ, इसको कंप्लीट करो. जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा मुझे पूछो. हाँ, तो बराबर है ना ये दिया हुआ. Determining the mass, it is difficult because the atomic mass find out करना. It is not the mass of that particular compound. It is mass of that particular atom. और atom, what is atom according to those days we know ना what is an atom. बराबर है ना? ये तुम्हारे नाम नहीं मालूम है. Sorry for that. कल से बोल देती हूँ है ना. उस टाइम पे एटम की तो कोई डेफिनेशन भी नहीं आता. दिया नेक्स्ट टाइम इधर बैठा करो, मुझे ऐसा ऐसा मेरा पेन होता है. और वैसे भी नेक्स्ट वीक में गणपति स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम थर्सडे और फ्राइडे. नाम छुट्टी पे इसके हाँ, ओके चलो नेक्स्ट सेंटेंस. Difficult task. Relative atomic masses were determined using write down. अभी ऐसे अलग बात है ना. Relative atomic masses were determined using law of chemical combination and the compounds form. Law of chemical combination and the compounds form. were determined by Using law of chemical combinations
and the compounds form. Now read whatever you have written and let me know this thing is very very clear to you or not. अच्छे से पढ़ो. And remember one more thing, your teacher will not ask you question based on this particular part. Question किस पे होगा आपका? Modern units. इस चैप्टर से ज्यादा ये जो स्ट्रक्चर ऑफ है ना, वो बहुत ज्यादा प्यारा था. और दूसरी बात ये है, अगर हम ये पढ़ के फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम करते थे ना, तो हमको ज्यादा इजी जाता था और मजा भी आता. हमने तो ये डिफिकल्ट पढ़ा और एकदम लोएस्ट वाले पर आ गए 500 रुपीस. नहीं मैम, वो वाला इजी था, ये हार्ड है. हार्ड नहीं है, इसमें तो सब कुछ फेल है, सब कुछ फेल वाला ही पढ़ रहे हैं. ग्राफ पढ़ रहे हैं, ग्राफ जब हमको यूज नहीं करना. चलो नेक्स्ट ले लो. सो दिस इज वो भी सिलेबस है ना, इसलिए हमें फिर कुछ सामने आएगा. हो सकते कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसने पूछ लिया तो दिस वाज द ओल्डर इशू. हमने फ्यूचर कुछ काम करने के लिए काम में आएगा ऐसा. हाँ तो रिसर्च वर्क वो तो एनसीईआरटी में कुछ ना बुक में किया था. Okay, next. For example, write down the same example. Carbon monoxide is formed. See, reaction is on board. Quickly write down explanation in your own word. पूरा वो reaction board पे फटाफट लिखो. Carbon monoxide is formed by 4 gram of carbon and 3 gram of oxygen. उतना लिख के ले लो. Combining 3 gram of carbon and 4 gram of oxygen. उसके बाद हो गया. 3 gram of oxygen लिखे. Carbon monoxide is formed by combination or by क्या लिखा है word combining 4 grams of carbon. नहीं, sorry 3 grams of carbon and 4 grams of oxygen. Then write down in other word, carbon combines with 4 by 3 times its mass of oxygen. उधर फुल स्टॉप करो और वो सेंटेंस को भी उधर ही रख के भूल जाओ. ओके, नेक्स्ट पार्ट राइट डाउन. अभी यहाँ पे उन्होंने बीच में है ना ये मॉडर्न यूनिट्स डाले हैं. इंस्टेड ऑफ लीविंग दोस मॉडर्न यूनिट, मैं आपको पहले वाले यूनिट ही बताती हूँ. Again write down the mass of carbon was assigned 1.0. What same page पर ही है? It is on same page. Last two sentences. 1.0 U and oxygen as the mass of carbon assigned as last sentence assigned as 1.0 U and units unifilled oxygen as 1.33. maybe इतना. हाँ 1.33. Then further write down which makes the calculation difficult. Afterwards, which makes the calculation difficult. And it is more convenient to have this number as whole numbers. Convenient to have these numbers as whole numbers or as near to the whole number. बराबर है. हाँ 1 के साथ में we can easily do the calculation.
but with 1.33 or with any other value, it is easy. No, na. So instead of that, it was again replaced by fraction decimal point were replaced by ऑक्सीजन. याद आया? मैंने ऑक्सीजन ही बताया था. रीजन क्या बताया ऑक्सीजन का? मोर रिएक्टिव. मोर रिएक्टिव बोल तो रिएक्टिव का मीनिंग ये है ना, इट कंबाइंस विद मेनी मेटल, इट कंबाइंस विद नॉन मेटल आल्सो. सो राइट डाउन, put full stop and then afterwards 1 by 16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit. 1 by 16 mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit was considered वहाँ पे अंडरलाइन करो 1 by 16 considered and write down reason. What is the reason for this? Reason to write down reason. Oxygen react with large number of elements and form compounds. This Oxygen combined with बेटा क्या हो गया? वो कोई जोक क्रैक कर दिया तो फिर हंसी नहीं कुछ नहीं. मैंने क्या किया, मैं कोई एक चीज बोलने लगा और मैंने उसका जोक क्रैक किया. मार्को ने वो जोक क्रैक कर रहा है, तो अगर जोक कर रहा है तो मुझको भी सुना हो कि मैं क्यों करूंगा, पर फिर आप मेरे में नाम डाल दो. 1 by 16 mass of atom of naturally occurring oxygen as a unit, and reason oxygen is reactive. Okay, and it react with many elements to form new compounds. They are okay now. Any doubt in this part? So initially with which unit they have started? Graph. Okay, and which difficulty they face in that particular thing, Ganesh? Element easily reacts with oxygen easily react with other metals to form compound. What difficulty they face with ground unit? यहाँ पर है बहुत डिफिकल्ट था प्रॉपर होल नंबर नहीं आ रहा था और जो नंबर आ रहा था उससे कैलकुलेशन डिफिकल्ट. So after that they replace it with other unit and they took carbon and oxygen as a standard, but again they found carbon is showing the mass of 1.33, तो वो whole number नहीं है, वो भी कैंसिल कर दिया. Then they moved to which element? Oxygen. Okay, oxygen. Why? What is the reason for oxygen? Reason is just now it is reactive with most of the element to form the compound. Okay, और weight कितना लेना था उसका fraction 1 by 16. Now for example, if we are taking 1 by 16, मतलब जितना mass है element का उसको 1 by 16 से हमको multiply करना है. तो division में वो चला जाएगा. For example, it is 60 into 1 by 16 divide करके आंसर आएगा. But again there is a high possibility of having a decimal point. बराबर है ना, सब तो नहीं रिड्यूस होने वाले. High possibility. And this was also completely thrown away and they came out with another isotopic form. Write down. This atomic mass unit give masses of most of the element, most को underline करो, most of the element as a whole number. Better you are not writing. हम कहाँ लिखा है? लिखा है
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे वाला सेंटेंस है वो, दिस एटॉमिक मास यूनिट गिव masses of most of the element as a whole number। वो पूरा पार्ट को अंडरलाइन करो, हाँ, most of the element as a whole number, this means what, हाँ, we have learned different models, there we have used most, few, some, these terms, याद है रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हमने ये टर्म्स यूज किए थे। इसका बोल रहा है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट विद द होल नंबर, मींस ऑल एलिमेंट विद द होल नंबर, most of the element, this means what, not all, few are still remaining and few are remaining with the decimal। समझ में आया आपको? बहुत घुमा फिरा के वो एएमयू यूनिट पे आया है। उन्होंने क्या बोला, ऑक्सीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं था, ऑक्सीजन इज गिविंग रिएक्शन टू ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड, बट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट दे आर गिविंग masses in whole number, पूरा नंबर, व्हाट नंबर, हाँ, whole number हमको चाहिए ना to make the calculation easy। Now here we are focusing on that particular term most, most means few are still remaining, they are not showing the whole number value, they are in decimal, they are in fraction, बराबर ना, and in order to get the whole number value some different element should be considered। समझ में आया? क्लास में अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव बना है आपका, सपोज फॉर एग्जांपल यू ऑल आर इन सेम क्लास 9th A, okay, whoever is your representative, if he is not an ideal one, तो वो ज्यादा दिन चलेगा, अगर वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं है, टाइम पे नहीं है, सबमिशन नहीं है उसका ठीक से, तो डू यू थिंक ही विल वर्क फॉर द लॉन्गर टाइम? टीचर विल अलाउ हिम, यू विल अलाउ हिम if he is not cooperating with you all in good things, whether you will allow to send him as a CR? तो थोड़े दिन के बाद में उसको तो रिप्लेस करना ही है ना अच्छे वाले से, तो क्या किया उन्होंने, अगेन दे रिप्लेस ऑक्सीजन विद कार्बन, और कार्बन को आज तक किसी ने रिप्लेस नहीं। कार्बन किंग ऑफ केमिस्ट्री, आइदर यू गो विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइदर यू गो विद द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कहीं ना कहीं आपको कार्बन का रेफरेंस मिलेगा, कहीं नहीं मिला तो मासेस में भी मिलेगा। समझ में आया? सो आफ्टर कार्बन द नेक्स्ट, सॉरी, आफ्टर ऑक्सीजन द नेक्स्ट वन इज कार्बन को किसने रिप्लेस किया है? नहीं, और शायद होने वाला भी नहीं कभी। नाउ राइट डाउन अबाउट कार्बन इन 1961, देखो फ्रॉम 500 BC डायरेक्टली जंप टू 1961, कितना डिफरेंस हो गया टाइम ड्यूरेशन में, लगभग कितने साल गए रहेंगे इसमें, बिग नंबर ना, 500 BC, फ्रॉम 500 BC now however in 1961, देखो कितना टाइम ड्यूरेशन चला गया, 500 हजार हो जाते हैं। BC means before the birth of this, before है ना, तो फिर बिफोर, जब वो टाइम ड्यूरेशन काउंट भी नहीं करते रहेंगे, शायद ऐसे लाके छोड़ दिया, उनके बर्थ के आगे से सब काउंट कर दिया है ना। ओके चलो 1961 में आ गए हम लोग। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 आइसोटोप, पेज नंबर 42, exactly under whole numbers. Carbon 12 isotope was chosen as a standard reference for measuring atomic masses. चलो अभी one by one you tell me the different terms which are given in this standard reference for measuring atomic masses. Under structure of atom we have done isotopes and isobars, बराबर है? याद आया? Isotopes and isobars.
What are isotopes? What are isotopes? Isotopes. आपने लगाया था याद है? You and that boy both were sitting here. हाँ? आपने लगाया था. उसको नहीं हो. हाँ, isotopes and isobars. हाँ, revise नहीं किया ना तूने? Very bad. Priya, this is for us. Yes. मुझे डेफिनेशन तो बोल दो आइसोटोप्स की डबल ब्रैकेट 5 isotopes definition. See for this part ना nearly 1 hour you all took. हाँ ऐसे करोगे तो it will become very difficult model. और मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये 500 BC का है 500 BC का 500 BC से हम कहाँ पे आगे बेटा 1961. अभी मेन तुम्हारा केमिस्ट्री जो है ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा. सिर्फ उस पार्ट में से 20 elements you have to learn with the symbols and atomic number that will help you there while writing valency and here also. Last class, huh? Any class left? Yes. दो मिनट में बच्चे एक बार बदल निकलो और दूसरे बार जल्दी निकलो. आज कौन सा चैप्टर रहना है? आज जाएगा. चलो मुझे बता दे क्या हो. ओके उधर से को कैमरा रोक के तेरे को इतना डेमेज ना कसम से होने चाहिए. ओ एक्चुअली काम डाउन ये बनी नहीं करता.